today. So I'm at Rishikesh, and the last time I came here it was a wonderful experience. So I'm here for 2 days, and since I really love the vibe of this place, I thought I should document it and maybe I'll see it बाद में जब भी मैं बोर होंगी और जब मुझे पहाड़ों पे जाने का मन करेगा. So yeah, so the place where I'm staying, so it's like a campsite actually. Camps सारे यहाँ पे हैं, and I'm sitting in the middle of the river. Yeah, so see the view. How pretty. And यहाँ पे भी रिवर है पूरा और मैं बीच में बैठी हुई हूँ. तो पूरे कहीं पे भी एक्चुअली नेटवर्क नहीं है, बट राइट नाउ इन द मिडल ऑफ द रिवर यहाँ पे नेटवर्क है. दैट टू एकदम फुल ऑन 3G. कैन यू इमेजिन? A few moments later. पापा हाय बोलो. हेलो. ये हम ट्रेडिशनल रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं अभी. वी डोंट नीड एनी रोप्स एंड लैडर्स. हमारा पैर ही काफ़ी है. 1 minute 37 seconds later. Now he is feeling sad. इसकी एक चप्पल बह चुकी है पानी में. And we couldn't save it. Papa is trying really hard to. Oh my God! अच्छा मिल गया पापा को चप्पल. Victory. Yay! Congratulations! Wow, look at that. I can sit here all day. Now it's time for campsite tour, I guess. So we are staying in one of these cottages, and wow, look at that sunlight. And middle में यहाँ पे एक swimming pool है, but we have natural pool right over there, so nobody is using this one. So that one is our cottage, and उसके just side में यहाँ पे tents हैं, and yeah, that's it. 1 hour later. Cheers to noisy neighbors. PM. So we just had some snacks and oh my god, अब एकदम sunset हो चुका है और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है. I mean, look at the sweater that I'm wearing. It's a huge sweater, बहुत मोटा sweater है. मेरे को तब भी इतनी ठंड लग रही है. The next day. Good morning. So I slept for 10 or 11 hours. And I'm not guilty. Loved it. Absolutely loved it.
सूर्यास्त के बाद नदी में प्रवेश करना या नदी पार करना वर्जित है, समझा? रात को मत कूद जाना पानी में। All set for day 2. Today we are going for rafting and I'm very excited. This is my second time and last time बहुत मज़ा आया था. I'm a little nervous but I'm very sure it's going to be fun. So let's go. मेरा rafting partner. Excited तो हूँ हल्का सा. Stop! Baik, mano. ओके सब लोग 3 टाइम बोले गंगा मैया की गुड। चलो ऑल फॉरवर्ड अगेन, दोनों टीम एक साथ चलाएंगे। ऑल फॉरवर्ड अगेन। ओके स्टॉप। ऑल फॉरवर्ड अगेन। राफ्टिंग एक्सपीरियंस पता बहुत मस्त, बहुत मजा आया। हाँ, मजा आया। बहुत हमने 16 किलोमीटर वाला ही किया है ना? बट 24 में और मजा आएगा। नेक्स्ट टाइम 24 अब तो आ गया ना कॉन्फिडेंस। ठीक है, पहले पूरा पानी में लगा डूब जाऊंगा, नहीं उठाओ भैया। फिर तो मजे कर रहा था पानी में। लिखा है नो फोटोग्राफी, तो तू फोटो क्यों खींच रहा है? सॉरी। हाँ सॉरी बोल। देखा नहीं मैंने। पामिस्ट्री पता लगा है क्या लिखा है? कर लिया है और अब हम यहाँ पे चिल करेंगे। सुबह कितनी सुंदर लगती है ना, अभी स्कैरी दिखती है। बट सेंट कितनी अच्छी आ रही है यहाँ पे। चिट्टा चिट्टा रंगनी ग्लो कर रहा है। समझ तुम कर लो, तुम्हें नहीं इजी है। कैसे ये देख 1 2 3 The next day. So this is the last day and now we are going back home. Really enjoyed my stay and I'm surely going to miss the beautiful blue sky. If you guys like this video, don't forget to actually like it. And this was it for my Rishikesh travel vlog. I'll see you in my next video. Till then, bye.